हेलो एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। आज का टॉपिक इसलिए स्पेशल है क्योंकि द पॉइंट इज as and when you start growing your Amazon global business, the first priority is always on how to get more orders, how to scale. But somewhere down the line, you miss the or you tend to focus on the fact that managing returns are important, but it becomes the second priority. For the same, there are two major buckets of how you can effectively manage returns. One is to reduce them, and the second is to make sure if there is a return, you are taking the right and correct measures to make sure the loss is minimal. So for the same, today we have Suraj, who has been in the industry for around 10 years now. He leads the e-commerce vertical for G Express. He also looks after warehouses services in US itself, so he has fair idea about what the practical situation is and how you can make the best use of the possible solutions so that you can minimize your losses and at the same time reduce your returns. So I'll quickly brief about what we do, what Skydo is. So Skydo is a payment aggregator platform for Amazon global sellers. For now we have more than 1500 Amazon global sellers with us. जितने भी मेजर मार्केट प्लेस है उसमें सब में यू कैन गेट योर ओन वर्चुअल अकाउंट instantly as you onboard with us. We are the only ones in India who provide instant FIRC plus EDPMS and EBRC closure automated. So you can also get FIRC on a lot of platforms, but we are the first ones to automate EDPMS and EBRC. Also जो भी नीश मार्केट्स है, जो मार्केट अभी नए नए शुरू हो रहे हैं जैसे स्वीडन, डेनमार्क, यूएई, तो उसमें आपको वर्चुअल अकाउंट्स इजीली नहीं मिलते जिसके कारण यू लूज आउट ऑन 1.5 to 2%. उसमें भी वी हैव all the local accounts for each of these countries. We are Amazon's official partner for payment service. We are also partnered with HDFC and Visa, and we work under RBI's cross-border payments license. So it is so far the best and most compliant way of receiving your Amazon payments. I would stick to this. I'll make sure that Suraj gets the most time to speak. Just that this is our community. You can just scan this QR and get access to our community. You will get expert guidance across domains, and we'll make sure that your export journey becomes as seamless as possible. I'll just give this a minute for people to scan in, then we can proceed with the content. So yes, Suraj, we can now proceed. I hope people will get immense value for it from it. Also, we are trying to make it little conversational. So as and when someone has a doubt, they can also raise their hands and unmute and then talk with you. So that because these are issues wherein there is no certain fixed answer. You need to make sure to understand the customer's context, what they are shipping, how they are shipping, to provide them with the right guidance. So let us proceed with the webinar. As and when there is a Q&A, then we can surely proceed with that as well. Absolutely. Thank you, Vidan, for giving me this platform to tell everybody that how do people are facing any issues in terms of return management, in terms of higher return rates, where how do you reduce them? Right, like rightly said, you had one issue that you can either reduce them or how do you actually act when you have a return. So because it's a cross border over here, it's not just that it's going to be returned from India. Even returns in India handling is not that easy for sellers who are doing it in India. But obviously, once it comes to cross borders, there's compliances and there's other stuff onto it. So I'll be happy to assist as much as people possible onto this call and answer their questions also. So if you guys have any doubt any time of the call, just please feel free to raise your hand, unmute yourself, and ask me questions. I'll be happy to answer all your questions at the same time as well. But yeah, now I'll be sharing you my screen. Just give me a minute. Is my screen visible? Yeah. It is processing. It would take a minute. Okay. I'll just hold on. Yes. Just confirm me once it's visible, right? Sure. Yes. Yes, it is visible. Wonderful. So today's session will be actually speaking about reverse logistics, that's return managements in cross-border and e-commerce,
and how do you get long term success, because success doesn't just matter about how do you sell, but actually how do you manage your overall supply chain that includes your forward logistics as well as your reverse logistics at the same time. So what do we see? What are the realities around us? Like we see that a global average of 20 to 30% returns that's have been increasing with time. Earlier, I still remember, I think 5 6 years back, this percentage was way lesser than 9 10 percentage. But currently, we see a higher return percentage of around 20 36%. And in fashion apparel specifically, when we talk about, I think the return rates increases a lot as well over here, up to 35 to 40%. Yeah. And if you see, like when you do 1,000 orders internationally, you may end up having a return of, let's say, 200 odd pieces back, or a refund request is. How do you handle your refund request? How do you handle your returns? How do you forward them again to the sellers if possible? So that's what we are going to be looking at today. So when you talk about cross-border returns cost you more than the forwarding of that particular product, because once you're forwarding, you might be forwarding it in a consolidation, or maybe at a bigger scale, but the return management is going to be of a piecewise from a particular address that has to be returned, right? So that increases your shipping cost altogether. Whereas some products might also feel like the return cost is more than the value of the product which are actually being sold. For example, products which are less than $20, 20 25 odd dollars, you might see that the product cost is not that much. The shipping cost forward and backward to combined together is at a higher rate than the product cost. So we need to be very particular about how do you manage the costing in terms of your returns and in terms of your products being shipped out of the country. So nowadays, not just Amazon, but let's stick to Amazon over here. But every service provider is very customer centric. In today's scenarios, there is almost a 30 day window from where you guys can actually, if somebody has purchased over there, and then can actually give a return out within this time span of 30 days, which is a very big time span. And I think that increases your returns as well at the same time. You need to have a local address. Like you're selling it in the US, you would need to have a local address in the US from where the returns can be, because the sellers, the buyers, the basic buyers can't be sending it back to India to you guys. It's actually going to be a local address over there. If it's an FBA shipment, the FBA handles it quite well over there, where they return it. If it's sellable, again, they actually want it back to the sellers, and then it can be sold again. But if it's an unsellable product, it actually ends up in whether they be destroying it or disposing it elsewhere. So that's something that Amazon policies, not just Amazon. If you see multiple channels like Walmart, TikTok, for that matter of fact, everybody has the same policy nowadays. It's good for it's good when it comes to the client side, but once it comes to the customer end, or once it comes to the seller ends, it's actually a very painful process to handle them, right? So what are the top return reasons, while we were checking out certain reasons, that why how were the returns like, and why did they return it? So basically, we found that 30% of the returns were majorly when the product was not as per the description. Like you have described a certain product, you have picturized, you have posted photos according, which doesn't actually matches the product, or which does not describes the product well, the customer tend to return it back. In specifically apparel category, we have seen sizing and fitting issues as well. Like you don't put a size chart onto your listing, that would affect a lot of your returns in terms of specifically about when we speak about apparel category. So that's one thing. Apart from this, also we have seen that sellers actually enlarge their photos of the product. Like let's say handicraft as in product, they actually enlarge it. They don't complete their listings in terms of writing the product descriptions, product sizes, and stuff like that, which ends up coming into us in return. Change in mind. We have seen that in US they actually do shop more, and they don't decisively have decisions that what are they shopping and how does their shopping looks like. But that's a lower rate. It is 20%, but still they change their decisions quite often over there in the states that we have seen in the recent time.
damaged in transit. While you're shipping it from India, we need to make sure that increasing a weight and putting extra corrugation onto your products in terms of fragile items and other items can actually support you in terms of lesser returns as well. I understand that while we ship outbound your shipments, there are certain chances that the weight of the product increases, but I think at a longer run it is better so that you don't end up in a bad customer experience and getting it returned because of damaged in transit, right? Wrong and defective items. Also, we have seen that, Hey, Suraj, yeah. uh, sorry to interrupt. The slides are not moving, so you are on the fifth slide, right? You can. I mean, it's still not visible. Yes, now it Am is. I? Yes, Yeah. I think in this view it it is. is. I It think is. in the Yes. presentation. Okay. Okay. So I think is the language are you guys comfortable with, or do you want me to switch in any other language, Hindi, Tamil, anything else? Because I'm bilingual as well. So I think major participants are, if they are okay, I think English works out for everybody. Yeah. As yes, for now, no one has sent in a request for any other language. You can proceed with English. Done. Done. So when we talk about internationally, there is a longer timelines for return management when it comes to international returns. Like when you talk about domestic returns, it usually takes within 3 or 7 days for processing the whole return, which includes refunding to the client. But when you talk about cross borders, it may take weeks to get it returned back to your country because of the custom compliances in the nation, the export compliances in the nation which you are selling at. Like for example, you are selling at the US, so there has to be certain export compliances that has to be pushed in over there. If you're importing back to India, so there are certain compliances that has to be taken care of. We'll be covering that in the upcoming slides, that what are the compliances and how does that look like. People do actually have returns where they bring it back to the nation, but that totally depends case to case, that what is your product size, how many returns do you have on an average on a monthly basis. That complete scenario changes customer to customer, like what they have to actually be doing. So, like I was talking about the custom compliances over here. Once you re-import anything, there are certain documentation like invoice and packing list, obviously that has to be given out. Also, like if you have exported, you have done a commercial export out of India, and you're re-importing back to the nation in terms of returns, you need to send the all the duty drawbacks and all the government benefits, the GST benefits you have gained, plus the interest of it back to the government if it's in return shipment. So it becomes more expensive. It's not just that you need to give them the duty drawback or the GST and it's over. You have to even pay an interest to the government of India if it's coming back. Also, HSN codes also makes it quite difficult over here and changes the whole scenario altogether. Like certain HSN codes, it's easier to bring it back. When we talk about categories such as DG, perfumes, batteries, or certain thing, it totally changes the scenario again. So what do we do now? So how do we actually handle those shipments? Is basically either you become a returnless refund, like you don't get a return itself because the product cost is so low that if you end up returning it to somewhere in the states, you'll be paying at more higher cost. So it's better that you leave it with the client and just refund them their money back. That is one thing that you could do, but I won't suggest that in a longer run, because in the longer run we have seen that certain sellers who are doing it, the customers become more smarter over here, and what they started doing is they started refunding it thinking that the product is not going to return as well and I'm going to get my money back. So after a certain set of time, that actually doesn't runs. But if your returns are way lesser, I would say if it's lesser than 3% at this moment, I would suggest you to refund those payments back to the customer itself. And if it's a lower cost product, if when I'm meaning by a low value product, if it's lower than $15, or even you can go take it up to a $20 product. If it's lower than that, I would suggest you to refund the payment to back to the client rather than bringing it to a hub or bringing it back to India.
But obviously, once it's an expensive goods, I think it's better to have a locally run warehouse. Like G Express has their own warehouses over there and supports a lot of sellers in terms of return managements in the states, in UK, in Amsterdam for the EU shipments. So you can have a local return hub, contact a 3PL like G Express, and get your shipments back easily over there. And then the 3PL like G Express, what do we do over here is we start examining the product whether it is again sellable. You can also send your packing materials depending like what's your return rate, and then we could repack it as per your choices and then send it back to the client. That is something that we usually do for many of the sellers across India and handle the returns very effectively. Also, if you still you see there's a way higher return rates which you're having, and there were customization onto it, and you can actually alter it by changing their labels, making new listings, or bringing it back to the nation, back to India. So that is another possibility that we do. But I would suggest this to return it back to the country if your product returns are in total, when it comes to the weightage also, if it's more than 500 kg, and if it's a container, well and good. But yeah, I would suggest if you consolidate all your returns on basically monthly basis or something like that at a local return hub, and then bring it back to bring it back to the country, I think that's a better choice rather than bringing single unit back to the country. So we help sellers have the return consolidation from the states, from UK, from UAE, from EU, back to the nation as well. So if you guys have any query about it, we'll be happy to assist you in whichever way. But again, I'm continuously repeating this thing, but it's very important to check that what product you have been selling, what's the price bracket you have been selling. It has to never be that okay मैंने return मंगा लिया और return फॉरवर्डिंग कॉस्ट के बराबर है, इससे तो आप अच्छा है कि आप एक नया गुड्स इंडिया से you create one and then send it back to the US. So you have to be very calculative in terms of how you're managing your returns over here. The whole process actually involves a lot of expenses. There's a money flow which goes on over here, and I think Skydo being which helps us in this money flow process. They'll be more than happy to assist you that how does this thing happen, but it actually impacts on your profitability as well, because there's a reverse shipping cost involved. There are refund processes which have been involved. There are unsellable inventory which actually piles up like a lot. So that's something that you need to take a call very quickly, that what are you be going to doing with your unsellable inventory, because storing it cross border also increases your storage cost over there. So we would suggest to take a call right away, that what are you going to be doing it. Actually, a smart exporter, how do they actually do is they actually know what they are going to be doing in cases of return. You can't just sit idle and say that okay पहले return हो जाने दो उसके बाद हम सोचेंगे इसका क्या करना है. So it is better that you calculate it pre, that how you're going to be handling them. We at G Express over here, how do we do it is ki we have a return authorization code, where once any return comes into our system, we actually check it out whether it is the product which is being shipped is quite well, or how is it resellable, is the product matching the product which has been sent, or just an empty box just returned to us. So we see everything, and then we tell you the actual situation of your commodity by posting images of it to you back, and then you decide that whether you want to authorize the refund or not in cases. So that's something that you can think about. Apart from this, there's a major impact of returns is that you get negative feedbacks onto your listing. Your account health has also been affected, and all algorithms in any of the platforms, let's say I've seen Amazon, Walmart, again TikTok, eBay, it's any platform you talk about, once you have a negative feedback or a negative impact onto the listing, your listing gradually the sales also keeps decreasing onto it. So it is very important that how do you manage your whole listing, and how do you manage the returns, and to maintain the profitability of it. Even you have to make sure that you're calculating while you're selling your products, you're calculating a certain percentages of return, that okay this is the percentage of return I'm going to be happening, and I add it on my profit margins itself pre the shipping happening. So if you don't add them, you'll be ending up at
at a negative level altogether. You see that okay, there are certain shipments that make money, but out of once you have one order written out of your 10 orders, all your profit margins have been eaten up by that particular order. So we would suggest you to have a certain calculation at the pre stage कि भाई मेरे पास इतने रिटर्न्स पहले से हो सकते हैं. आई हैव टोल्ड यू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स once it comes to apparel category, it is close by to 30-35 percentage, but a normal category also I have seen a return of 20 percentage. Last year specifically, Indian ethnic return Indian ethnic products, Indian ethnic apparels specifically had a return rate of around whooping 75 percentage during the Diwali season in the US. So that's a very very high return rate, and which impacted major profitability of major sellers. Where we had a discussion with them that how did this happen and how stuff. So people have become like in terms of apparel as a category have been more vulnerable during this time, but we would suggest you to have a proper description. And how do you actually prevent this to happening is ki, like said, accurate description. Your product description has to be complete, like the sizing of your product, what is it made up of, and how does it the images also are not that the product looks bigger or smaller in size. It has to be like visually appealing in that case. And like said, in multiple images you have visual representations of how do you see, like if it's an apparel, just make sure that you have a model photography also. And if it's a product, keep it in a table and check out that okay, this is the size of the table and this is how the product is going to be looking onto when it's going to be kept on the table. If it's a hanging product, I would recommend to have a larger view over here in terms of keeping in comparatively images with your product, so that the person can actually imagine okay, this is the size of the particular product. Size guides, I initially told you that you have to have your size guides, because every country now, let's say shoes as a category, there's UK size, there's US size, there's India size, so it totally depends on every country, right? So हर country में वो size guide अलग हो जाती है. So while you're sending the shipment, make sure that you have your size guides right. You make sure that it's as per the standards of the destination country where you're selling at. For example, you're selling at UK, so make sure the shoe sizes or the product sizes are in inches. There is a certain amount of confusion where in India you actually measure in centimeters and kg, but in certain countries like in for that matter of fact US and UK, usually how they do it is that's in lbs and in inches. So it totally changes the game altogether. It's actually 2.2x more, right? So if you just put in centimeters, people actually get confused. Okay, it will be written as centimeter, but people don't know in the states that how do you calculate centimeters. They are well aware of inches over there. Also I suggested you about quality packaging. So packaging ऐसी चीज है कि you have to be very very means proactive onto it, that if it's a fragile packet, make sure that you have extra corrugation onto it, you have bubble wraps onto it so that it doesn't get destroyed in transit. We saw that there's an around a percentage of 10% to 15 percentage returns in terms of packaging which gets destroyed in transit, even if you're sending it to an FBA center. सो मैं चाहूँगा कि जो आउटर बॉक्स की जो पैकिंग होती है ना, वो भी सेलर्स सोचते हैं कि यार 30 रुपीज़ का बॉक्स आ जाएगा अगर वो 3 प्लाई हो. मगर व्हेन इट्स एन एक्सपोर्ट साइज, you have to have at least a 7 ply box over here, so that your product inside are very safe and during transit. Export transit is a longer duration. When it comes to air, it takes around like somewhere around 7 days transit lag jata hai US tak pahunchne mein. And there are multiple people handling a particular shipment. People in India, people in the States would be handling it. There are custom people who will be handling it. There are warehouses who will be handling it. So it actually moves through multiple hands, right? So packaging plays a vital role. And I have seen that if you have a quality packaging, and if you change your packaging, you'll reduce almost 5 to 10 percentage returns then and there itself. So that's something that you should be doing. Pre-export QCs. So we have seen that labeling mistakes happen by customers where they put the wrong barcoding. Their staff do it not intentionally, but unintentionally also it happens. So we would suggest to have a pre-export QC team with you guys, which actually checks, is the packaging being done quite well, is the all the things which have been included, like it's a set of three, so there are three pieces into it. Or let's say if it's multiple items, there has to be
there into that product? Are all the product kits available in that particular unit? So that's something that you have to be doing a product inspection before you're shipping. That's very important, and I would suggest you to have a separate team apart from your packaging team who actually does your pre-export QCs in this matter of fact. So that's it from my end. I think I'll be happy to take some more questions from you guys if you have. So I can see the first question. It is, my product have a short shelf life and the value is over $30 for each product. As and when they are returned, I incur additional charges for obtaining the destruction certificate. Is there any way to reduce or optimize these costs? I guess you're talking about products if it's having a shelf life, it's actually eatable products or something like that. If I'm not wrong, I think if you guys can Um, answer. sh- Aditya ji, you can even unmute and directly talk. It would be easier for us to get context over the situation. Yes. Can you please explain एक बार कि exactly क्या situation है? Well, the thing is that we our products have the shelf life of very short duration. So when we ship it already almost half of the shelf life will be destroyed. Like मैं यहाँ से shipments जो भेजता हूँ उनकी shelf life ऐसे ही कम होती है और यूएस पहुंचने तक उनकी shelf life आधी ऑलरेडी डेड हो जाती है. इन I, केस रिटर्न्स आते हैं तभी रिस्ट्रिक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है हमको क्योंकि वापस आ नहीं सकते कोई यूजलेस है. वेल सेड आदित्य. आदित्य, इसमें दो चीज़ें होती हैं. शेल्फ लाइफ ज़्यादातर ईडेबल प्रोडक्ट्स के साथ होती हैं. आई थिंक योर प्रोडक्ट्स आर ईडेबल प्रोडक्ट्स, और इसमें स्पेसिफिकली रिटर्न्स आप इसको क्लोज करके रख सकते हो कि देर आर नो रिटर्न्स एक्सेप्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. क्योंकि इस कैटेगरी में आई थिंक यू कैन क्लोज ऑफ योर रिटर्न्स. द ओनली रिटर्न्स विच एक्चुअली हैपेंस इन दिस कैटेगरी इज एड्रेस नॉट फाउंड, एड्रेस अनडिटेक्टेबल्स, जहाँ पे हमने ये देखा है कि सेलर्स जो MFN ऑर्डर्स इंडिया से शिप करते हैं, दैट इज मर्चेंट फुलफिलमेंट ऑर्डर्स जो इंडिया से वो लोग शिप करते हैं, उसमें वो एड्रेस गलत डाल देते हैं. और उसका भी मैंने परसेंटेज नहीं लिखा मगर बिकॉज वी आर होपिंग इट्स मेजरली फॉर FB और सेलर्स वो सेंडिंग इट इन बल्क. बट बहुत बहुत वी हैव सीन अप्रॉक्स 30-35% return rates for people who have actually not written a full address or maybe writing wrong addresses over here. Again, over here at G Express, we have a very specific tool where we actually verify the addresses during their exports, and we actually give them recommendation. Hey, you're shipping to this address. Maybe you haven't written your apartment number over here, or maybe there's no villa number over here, which might affect your deliveries. So we would suggest you to add it. But if you still want to push it, we can obviously push that order. But we give a suggestion to the client so that it becomes easier for them to handle their MFN orders over here. सो हमारे केस में तो हम लोग बहुत ही ये रहते हैं कि हम पूरा का पूरा वैलिडेट करते हैं एड्रेस को कि एड्रेस गलती से भी गलत ना हो जाए. सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव डन. अपार्ट फ्रॉम दिस, एज वी आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 9 years नाउ, 9+ years itself, so हमें ये पता है कि देर आर ऑल्सो फेक एड्रेसेस एंड देर आर एड्रेसेस जहाँ से रिटर्न रेट बहुत होती है. मतलब कस्टमर्स बहुत करते हैं, दूसरे सेलर्स के साथ इनने करा हुआ है. So we send them warnings, early warnings to the seller कि hey, this is a cash on delivery order, or maybe why don't you guys check out this address or call those client whether he wants this product or not beforehand itself, because which reduces actually change in mind वाला जो returns थे, which is almost 20% returns in this case. तो वो एक returns भी कम हो जाता है. तो आदित्य जी, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू, अगर वो एड्रेस मिस्टेक की वजह से है तो प्लीज वैलिडेट योर एड्रेसेस क्वाइट वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ इट्स अ डिलीवर्ड शिपमेंट, प्लीज क्लोज योर रिटर्न्स इमीडिएटली. एक ऑप्शंस आते हैं स्पेसिफिकली फॉर रीडेबल प्रोडक्ट्स. इफ योर प्रोडक्ट्स आर रीडेबल, यू कैन एक्चुअली से देम ओके वी डोंट एक्सेप्ट रिटर्न्स एट ऑल, एंड रिटर्न्स को ही क्लोज कर दो कि सो दैट वो रिफंड के लिए क्लेम ही नहीं कर सके. ओके ओके थैंक यू सर. Also, Suraj, just to add on कि usually ये case में what is the industry standard? Like, would the likelihood of getting orders decrease if we switch off the refunds, or is it a industry practice for edible options items to not have a refund option?
आई थिंक अमेजोन स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट अमेजोन में, तो वो लोग बाय डिफॉल्ट फूड कैटेगरी को रिटर्न्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं. सो आई थिंक फॉर अ लोअर शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली शेल्फ लाइफ उनकी होती है जो कि ईडेबल होते हैं या ऐसे ही प्रोडक्ट्स होते हैं. आई थिंक फ्रोजन फूड्स होते हैं या समथिंग लाइक दैट मे बी. मगर उन प्रोडक्ट्स के ऑटोमेटिकली अमेजोन से रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ अमेजोन एज इन सेलर पार्टनर. बट अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स में जाओगे तो या आप खुद की वेबसाइट से, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट शॉपिफाई या कोई ऐसी कोई वेबसाइट से आप सेल कर रहे हो, सो आई वुड रेकमेंड कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, सही बात है कि रिटर्न्स, अगर किसी आदमी को रिटर्न्स नहीं मिलते तो वो दिक्कत देता है. मगर मैं चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में यू हैव टू क्लोज ऑल योर रिटर्न्स, क्योंकि वो एक चीज़ है कि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सब लोग ही उसको ही फॉलो करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग करने वाले हो, आपकी सेल कम हो जाएगी, ऐसे कुछ डोंट वरी अबाउट दिस थिंग. और अगर सेल कम भी हो रही है तो ये भी तो देखो रिटर्न ना के बराबर होने वाले हैं. सो आई थिंक द मार्जिन्स वुड कवर अप ओवर हियर. जिसको खरीदना है वो ही खरीदे आपके प्रोडक्ट को. अंडरस्टूड. राइट. सो एक बार एक क्वेश्चन था कि क्या हम लाइव डेमो में जो हमारी कॉस्ट कैलकुलेशन होती है उसमें हम लोग कैसे हमको ऐड करना चाहिए रिटर्न का कॉस्ट, मान लो कोई भी एक इंडस्ट्री बेंचमार्क लेके, अगर आप लाइव फ्लो में बता पाओ कि मेरे को अपनी प्राइसिंग में कैसे रिटर्न का ध्यान रखना है, तो वो काफ़ी सही होगा. सी, आपकी जो सेल्स की जो भी वॉल्यूम आने वाले हैं, लेट्स से कि आपने आपने एक प्रोडक्ट को आप एक $20 में आप सेल कर रहे हो इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सो हम्म. एज पर माई एक्सपीरियंस 50% प्रोडक्ट की कॉस्ट तो अलग अलग वो ही ले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके channels like Amazon takes a certain percentage of amount. Maybe you're doing an FBA or an forward logistics, वो एक certain amount ले जाता है. तो मेरे हिसाब से that comes around 50% over here, depending again category to category अलग होता है. मगर मैं एक 50% लेके चलूँ तो आपके पास $10 बचते हैं. अब $10 में आपके प्रोडक्ट मेकिंग कॉस्ट कितनी है, वो आपको एक एड ऑन करना पड़ता है. सो मेरा सजेशन ये रहता है, वॉट एवर इट इज़ योर प्रॉफिट मार्जिन आप पहले से जितना लेके चल रहे हो, उसमें just add on a 3% for your returns as well. If it is a normal category, when I'm talking about handicraft as in category or टेक्सटाइल एज एन कैटेगरी, उसमें आप एक अपने प्रॉफिट मार्जिन में एक 3% एड ऑन करके चलना, जो कि आपके रिटर्न्स के आपके हैंडलिंग कैसे चल रही है उसको हैंडल कर लेगा. अगर ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, अगर $60 $70 $80 में बिकता है, तो इसके रिटर्न रेट्स ऑब्वियसली साइजेस के हिसाब से भी अलग अलग हो जाते हैं कि कितना बड़ा उसका साइज है शिपमेंट का. मतलब लेट्स से कि इट्स अ कॉटन पिलो, सो द साइज ऑफ द शिपमेंट इज ह्यूज बट द प्रोडक्ट प्राइस इज वेरी लो. ठीक है, तो अब पिलो को रिटर्न मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. सो इट इज़ बेटर दैट यू लाइक द फर्स्ट सिनेरियो व्हिच वी सेड, इवन दो योर प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, it totally is a case that you can actually leave them back, leave them with the client over then and there. So एक चीज वो हो सकती है इस केस में. मगर अगेन ये किसी के लिए एक सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है कि इसका ऐसे काम करेगा या इसके लिए ऐसे काम करेगा. सबके लिए अलग अलग तरीके से काम करता है. तो आपको खुद अपने रिटर्न रेट्स के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट स्टेप आर यू गोइंग टू बी टेकिंग. वी डिस्कस्ड अबाउट 3 steps, राइट? कि या तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो, या तो आप उसको वहाँ पे एक लोकल वेंडर्स हमारे जैसे 3PL पार्टनर्स के साथ आप यूज़ करके उधर आप रिटर्न करके वापस से फॉरवर्ड देम टू अ न्यू कस्टमर, either bring it back to your country. So bringing back to the country is again not an easy task, right? तो उसके लिए भी आपको एक बड़ा साइज ऑफ लॉट शिपमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो वो आप एक चीज़ आपको लुक ऑन करनी पड़ेगी. एंड अगेन इट्स टोटली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. आप हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के साथ आप टच में आ सकते हो और दे विल बी मोर बेटर टू हेल्प यू आउट बेस्ड ऑन योर एग्जैक्ट सिनेरियो व्हाट यू हैव बीन फेसिंग. अंडरस्टूड. सो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि ये अगर मान लीजिए मैं चूज कर रहा हूँ कि आई वांट माय प्रोडक्ट्स रिटर्न बैक टू इंडिया, राइट? तो वो उसमें आप बस एक बार बाइफर्केशन दे देंगे, बस ऑल द लिस्ट ऑफ कॉस्ट दैट वुड बी इन्वॉल्व, क्योंकि हम एक बार सोच तो लेते हैं ठीक है हम इंडिया मंगा लेंगे, उसके बाद जब एक्चुअल इकोनॉमिक्स की बात आती है तो इशू शुरू होता है कि ये भी कॉस्ट लग गया, ये भी कॉस्ट लग गया. तो एक बार ऑल द लिस्ट ऑफ कॉस्ट कॉस्ट दैट आर इन्वॉल्व आप एक बार वो लिस्ट डाउन कर दीजिए. एब्सोल्युटली. सो एक जो सबसे बड़ी कॉस्ट आती है, आप एक सिंगल यूनिट को तो इंडिया वापस मंगाना, आई वुड से दैट इज नॉट वर्थ इट.
You have to consolidate in any warehouse in the overseas. मान के चलो in terms of United States also आपको सारे products आपके महीने भर के returns आपने एक जगह इकट्ठा करे. So you'll be ending up paying a storage cost over there for at least a month at least जहाँ पे वो consolidate हो रहा है, right? And then you'll be paying a freight charges from the states back to India. अगेन इसके अलावा जो आपने शिपिंग बिल्स वगैरह जनरेट करें एक्सपोर्ट के वक्त, आपको उसको वापस से गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है कि ये आपने एक्सपोर्ट किया था एंड इसके अगेंस्ट में ये रिटर्न आया है. सो you'll be have to paying the GST back to the government if it's sent on GST. You would have to pay all the government benefits like ड्यूटी ड्रॉबैक आपने लिया है, ROSTL लिया है इन केस ऑफ अपैरल्स. तो वो आपको जितने भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं विद इंटरेस्ट, let's say you have exported back then in January and you want to return it in March, क्योंकि अगेन Amazon भी जैसे मैंने बताया कि एक 30 डे रिटर्न विंडो देता है, तो यू विल बी एंडिंग अप पेइंग ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का आपको एक कंप्लीट इंटरेस्ट भी उस पर पे करना पड़ जाएगा. सो ये सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन डोर डिलीवरी वो सारी चीज़ें तो फ्रेट में ही कवर हो जाती हैं, मगर ये मोटा मोटा आप समझो कि कंप्लाइंसेस एक कॉस्ट ऐड हो जाती है जो आपको देखनी पड़ती है. और प्लस आपको वहाँ पे एक जगह जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हो, सो वो एक कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है. तो मेरी हाई रिकमेंडेशन यही रहती है जितना आप काम वहीं की वहीं करवा सकते हो. लाइक आई सेड कि आप चाहे अपना पैकेजिंग मटेरियल वहाँ भिजवा दो, रीपैक करके वापस किसी और सेलर को भेज दो. वी हैव ऑल्सो सीन सर्टन रिटर्न्स विधान ओवर ईयर की जहाँ पे ना अमेजोन के यहाँ गलत लेबल करके अमेजोन FBA में भेज दिया सेलर ने. तो सेलर को वापस से एक वेयर हाउस में मंगाना है, उसको रीलेबल करना है और वापस से FBA भेजना है. सो आई थिंक वो एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप एक लोकल प्रोवाइडर के साथ ये चीज़ कर लो रैदर देन ब्रिंग इट बैक टू इंडिया सिर्फ रीलेबलिंग के लिए. लेट्स से इन आर केस जहाँ पे हम लोग ओवरसीज रीलेबलिंग करते हैं, हार्डली कॉस्ट यू 27 सेंट्स अ यूनिट, है ना. ओके. तो वो अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन अ प्रोडक्ट साइज, जस्ट गिविंग यू नॉर्मल प्रोडक्ट आइडिया कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट में 27 सेंट के आसपास एक कॉस्ट अकर हो जाती है. सो आई थिंक दैट इज अ फार मोर बेटर पिक्चर ओवर हियर रैदर देन ब्रिंग इट बैक टू इंडिया जहाँ पे आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं करते हुए $7 से $8 एक प्रोडक्ट के ऊपर खर्च कर चुके होगे उसको वापस मंगाने में. इतने में आपका वो प्रोडक्ट ही नया बन जाएगा. So I would suggest to handle them overseas as well as much as possible. Understood. Next question is, most of our returns are for shipping address undeliverable or unable to deliver. How can we reduce this? So best practices क्या हो सकती है ये केस में, ये स्पेसिफिक इशू के लिए? अगेन लाइक सेड कि हमारे एड्रेस वेरिफिकेशन का जो एक बहुत ही अच्छा हमने ऑप्शन रखा हुआ है कि जहाँ पे आप जाने से पहले ही आप उस एड्रेस को वेरीफाई करो. सो वी हैव ऑलमोस्ट टेकन ऑल एड्रेसेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे हम लोग सारे तरह के एड्रेसेस इंक्लूडिंग अपार्टमेंट्स, विलाज, विला नंबर्स, जिप कोड्स भी. आपको लगेगा कि जैसे फॉर US 5 जिप को 5 न्यूमेरिक्स का होता है, मगर इट्स नॉट दैट द केस. देयर इज एक्चुअली एन एडिशनल 4 numerics after that also available at the zip codes also as well. तो zip code और बड़ा हो जाता है, मगर sellers क्या करते हैं उसको 5 digits का ही लिखते हैं. सो मैं recommend करता हूँ कि वापस से आप अपने buyer के पास जाएं और उससे reconfirm कर लें एड्रेस को अगर उसने एड्रेस गलत भी डाला है तो. सो हैव अ स्पेसिफिक टीम हु एक्चुअली वेरीफाइज एवरी एड्रेस. जैसे हमारे केस में तो यू कैन डू इट बाय एन API itself क्वाइट वेल कि वेर यू कैन वेरीफाई योर एड्रेस. और हम लोग जहाँ जो जो एड्रेस आपको वैलिडेट करके नहीं दे पा रहे हैं कि बॉस इसमें यू आर मिसिंग दिस थिंग और वी रिकमेंड यू टू change this particular address with a certain expressions की मतलब स्टेट्स का नाम ऐसा नहीं, स्टेट का नाम ही आपने गलत लिख दिया. बिकॉज एवरी देर आर 50+ स्टेट्स इन द US जहाँ पे एब्रीवेशंस भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं. थोड़ा भी इधर उधर लिखने पे पूरा का पूरा ही शिपमेंट रिटर्न्स हो जाते हैं. सो आई वुड recommend टू हैव अ स्पेसिफिक पर्सन हु एक्चुअली वैलिडेट्स दैट एड्रेस. मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, मगर अगर ठीक है आपके पास हमारे जैसे लॉजिस्टिक प्रोवाइडर नहीं है तो मैनुअली उसको करें, एक टीम रखें. एंड देन एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू इज कि वेरीफाई दोस एड्रेसेस बैक विथ योर बायर्स. और अगर MFN का केस है जिसमें लिमिटेड शिपमेंट्स हो रही हैं, तो उसमें अगर वेरीफाई करना है तो क्या आप कुछ अपार्ट फ्रॉम, जैसे अगर आपने मान लीजिए ओशन नहीं कर रहे, आप MFN सिंगल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, उस केस में अगर आपको वेरीफाई करवाना है कि ये एड्रेस लेजिबल है और क्रेडिबल एड्रेस पे भेज रहे हैं, तो आर देयर एनी रिसोर्सेज और अ वे पॉसिबल ऑन द इंटरनेट टू डू द सेम?
सो या लाइक सेड, बट देर आर मेजरली जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल आपको मिलेंगे वो पेड रिसोर्सेज मिलेंगे, सो यू हैव टू पे देम अ Okay. सर्टेन अमाउंट। Okay. मगर अगर आपका लॉजिस्टिक प्रोवाइडर ही अगर वो दे रहा है तो आई वुड रेकमेंड कि आप ऐसे लॉजिस्टिक प्रोवाइडर ढूंढे जो कि एड्रेस वेरिफिकेशन एज अ सर्विस भी एड ऑन दे रहा है। बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ या तो ऐसे ढूंढते हैं जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर अच्छी कॉस्ट दे रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कॉस्ट, सर्विस और एड ऑन्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि एड ऑन्स और क्या क्या दे सकता है एक लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। सो वन ऑफ द सर्विसेज एड्रेस वेरिफिकेशन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ वो एड्रेस वेरिफिकेशन कर रहा है, आपके रिटर्न्स मैनेज कर पा रहा है वो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर क्या वहाँ पे। So how well was he is in handling the RTOs? How well was is he in actually safely getting your products reaching over there? जो मैंने कहा कि हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट भी कैसे कर रहा है, सर्विस के अलावा हैंडलिंग एक आता है, टाइम लाइन देखें, पैसे ना देखें, साथ में ये दो तीन चीज़ भी देखें कि वो कैसे कर रहा है। डू दे हैव देयर ओन सेटअप ओवरसीज? तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि before choosing a right logistic partner, that okay, do they have these thing tick marks with them. So MFN के केस में भी over here we at J Express are doing MFN for certain clients. So हम लोग क्या करते हैं, अगेन एड्रेस वेरिफिकेशन वाली APIs हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, where they actually do their address verification before sending their goods. Understood. Do you have any other questions? You can raise your hands and get it answered. Also, will it be possible at your end to, after the webinar, can we send them a checklist to make sure the pre-sales cycle contains all the things required f- to prepare for a return, like the HSN codes to be labeled, all the details to be mentioned properly. So, can we share them a one-pager doc for the same? Absolutely, absolutely. I'll be happy to share them after this. I think जो भी email IDs आपने यहाँ पे share करी हैं, you'll find them after this call। उस email IDs में आपके पास एक one pager ज़रूर मैं भेज दूँगा, where I'll send you some tips and tricks as per my understanding कि जो मैंने सीखा हो इतने सालों में, जहाँ पे sellers को ये problem आ रही है और मैंने resolve करी हो। So it will be quite an enlightening one for me as well, and I'll be very grateful that कि मैं आप सबको वो share करवा रहा हूँ It इस। would be great for the sellers as well. Also, वो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें देयर इज अ फॉलो अप क्वेश्चन दैट Amazon is handling storage and returns for them in US. तो उस पे वो एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? सो अमेजोन के केस पे भी अमेजोन तो पहले ही जब वो लेता है तो आई थिंक उसमें अनडिलिवरेबल्स का बहुत कम आ रहा होगा प्रियंका जी। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि आपके कितने उसमें रिटर्न्स आ रहे हैं, मतलब एड्रेस वेरीफाइड है कि नहीं है उस केस में। तो बिकॉज अमेजोन हैंडल्स द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स लॉजिस्टिक्स फॉर यू व्हेंस यू कीप इट इन द FBA। और जहाँ रिवर्स लॉजिस्टिक्स में हमने ये भी देखा है कि अमेजोन जो अनसेलेबल कर देता है, आप ही की लिस्टिंग के नीचे उसको सेल करने लग जाता है कि सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की तरह, कि इट इज बीन ऑलरेडी बीन यूज्ड एंड यूज प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, वो एक चीज वो करते हैं। सो आई थिंक अमेजोन के केस में आप एड्रेस वेरिफिकेशन आपको करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी हैंडलिंग द लास्ट माइल डिलीवरी पार्ट ओवर हियर, बिट ओवर हियर। इट्स बेसिकली अमेजोन हु इज हैंडलिंग इट। आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ से जब आप FBA भेज रहे हो, वो एड्रेस आपने एटलीस्ट सही डाला है क्या। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि गलत FBA में जा रहा है। सो proper FBA ID mentioning, TOs, that is your reference number mentioning, so that proper appointment channels have been used to take appointments of that particular shipment। वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही है क्या, बस आप वो चीज़ दे सकते हो। मगर आई थिंक when Amazon is handling your storage and returns in USA, so they'll be the person who will be taking care of the complete last mile delivery। so उस केस में तो अपना बिल्कुल वो नहीं रहता है कि कंट्रोल नहीं रहता है कि जहाँ पे आप ये करते हो। दिस इज जस्ट व्हेन यू आर डूइंग एन MFN ऑर्डर, आप अपने एड्रेस वेरिफिकेशन को यूज़ करें। एंड जहाँ पे आप एक 3PL वेयर हाउस यूज़ कर रहे हो, या यू आर सेलिंग इट थ्रू योर ओन वेबसाइट्स और एनी अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको बेचना है, तब आप एड्रेस वेरिफिकेशन का ये चीज़ आती है। इन केस ऑफ FBA आई थिंक एड्रेस वेरिफिकेशन का अनडिलिवरेबल्स का बहुत कम ही रिटर्न्स होते हैं। जब भी रिटर्न होता है तो उसके बाद Amazon Amazon ask you about what to do about this product or how does it exactly work? सो अमेजोन वेदर इट इज अगर अनडिलीवरेबल होता है ना, तो मेजरली तो अमेजोन उसको वापस आपकी इन्वेंट्री में ऐड कर देता है
कि बॉस यू कैन सेल इट अगेन ऑन टू योर प्रोडक्ट्स। मगर अगर वो ओपन हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट ही खुल जाता है, उसके अंदर से प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं, तो दो तीन चीज़ें आ जाती हैं इस केस में कि जहाँ पे वेदर इट इज सेलेबल अगेन, वेदर इट इज मैचिंग हाउ हाउ इट हैज, मतलब वो कैसे रहा है, उसकी पैकेजिंग, प्री पैकेजिंग कैसे रही थी, दो कंपेयर करते हैं वो लोग। और फिर वो डिसाइड आपको करना पड़ता है। देयर इज एन ऑप्शन वेर यू कैन पुट अ परमानेंट रिटर्न एड्रेस, लोकल एड्रेस आपको देना पड़ता है, जो कि हमने इसी प्रेजेंटेशन में स्टार्टिंग में दिया था। एक लोकल प्रोवाइडर का एड्रेस देना पड़ता है जहाँ पे वो आपके सारे रिटर्न्स भेजें। अगर आप कहते हो कि डिस्पोज ऑफ करना है उसको, सो द सेकंड ऑप्शन विद देम इज यू कैन ऑटो डिस्पोज इट ऑफ। तो दोनों ही ऑटोमेटिक ही अमेजोन प्ले करता है इसमें। यू नी नॉट डू इट ऑर्डर वाइज कि इस ऑर्डर में अपन ये कर रहे हैं, इस ऑर्डर में ये करने वाले हैं। तो ये एक चीज़ आपके रह जाती है कि आप ये छोड़ सकते हैं। Also, I've heard some sellers find vendors locally who can resell a product at the cost you are listing them on Amazon, but उससे सस्ते में, जैसे bulk में they release a product and get it sold in the market. So do you see it as a opportunity or is it very subjective and बहुत थोड़ी sellers ये कर पा रहे हैं? ये अगेन प्रोडक्ट वाइज सब्जेक्टिव हो जाता है। आई थिंक Amazon have also started their liquidation as a service, and there are a lot of 3PL partners who do liquidation. This particular process what you're talking about is called as liquidation, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स का पता नहीं होता है कि इसका करना क्या है। तो वो लिक्विडेशन की एज एन सर्विस, देर आर पार्टनर्स हु हेल्प आउट इन लिक्विडेशन, इंक्लूडिंग अस फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ पे हम लोग सेलर्स के बल्क ऑर्डर्स आ गए हैं या मतलब बहुत टाइम से एफबीए में पड़े, उनकी लिस्टिंग नहीं चल पाई है, वो सेल ही नहीं हो पाए हैं, बहुत टाइम से उनकी स्टोरेज लगती जा रही है। सो वी ऑल्सो हेल्प सेलर्स फॉर लिक्विडेशन एज एन सर्विस, वेयर वी हेल्प देम आउट की लिक्विडेट करना है तो कुछ ऐसे करें। इवन अमेजॉन एफबीए भी करता है। सो दैट इज अ प्रोसेस apart from these two. I think since last 2 years they have also started liquidation as a service. So I think that's also a good idea, by the way, if you have a lot of returns. I think returns वाले प्रोडक्ट के नहीं, ये मेजरली आपके unsellable प्रोडक्ट्स के लिए जो कि बहुत टाइम से ओवरसीज पड़े हुए हैं एफबीए लोकेशंस में। आई थिंक देयर लिक्विडेशन एज एन सर्विस प्लेज अ वाइटल रोल। Understood. एक और क्वेश्चन था, apart from FBA, are there any other fulfillment options available? MFN fulfillment is quite expensive, especially since we also sell it from our own website. So yeah, so fulfillment, selling it from their own website is an task altogether. मतलब अगर आप इंडिया से एक single, let's say your product is 500 grams or kg, and it's not customizable. I wouldn't recommend for customization product के लिए आप ये करें। मगर अगर आपका product bulk में बहुत ज़्यादा बिकता है, so again you have to start using a 3PL warehouse overseas। मान के चलो आपने हमारा वेयर हाउस जो न्यू जर्सी में वो यूज़ करना चालू करा, तो वी डू फॉरवर्ड शिपिंग ऑल्सो फॉर क्लाइंट्स, जहाँ पे सेलर्स यहाँ हमारे वेयर हाउस से फॉरवर्ड शिप कर सकते हैं टू देयर कस्टमर्स इफ दे आर सेलिंग थ्रू देयर ओन वेबसाइट, इफ दे आर सेलिंग इवन थ्रू अमेजोन ऑल्सो। अमेजोन का वेयर हाउस नहीं यूज़ करना चाहते, लाइक आई थिंक बिफोर दिस क्वेश्चन where we were seeing Amazon is handling the storage and the US returns, how do we still do the address verification? So you can use a third party logistics and do an MFN order। Amazon के साथ साथ ही आप अपने मल्टी चैनल फुलफिलमेंट्स कर सकते हो। Like let's say you can sell it on Walmart, Etsy, eBay, Shopify, WooCommerce। TikTok shopping भी बहुत चल रहा है। I think the TikTok shopping has become the third largest shopping channel in the US right now for online sellers। So we have seen a lot of growth over there also। So MFN orders, खुद की ब्रांड अगर है आपकी अच्छी खासी, खुद के वेबसाइट से सेल कर रहे हो, तो यू हैव टू यूज़ अ 3PL पार्टनर ओवर देयर, कि जहाँ पे आप जैसे FBA में रखते हो वैसे ही आप हमारे वेयर हाउस में लेट्स से आप रख लेते हो, और हम लोग उसको यूएस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उनके रिटर्न्स भी मैनेज कर देते हैं फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट उसके साथ ही। सो मल्टी चैनल फुलफिलमेंट इज समथिंग दैट यू हैव टू लुक एट ओवर देयर, आदित्य जी। Also, just a question, अगर Amazon FBA यूज कर रहे हैं versus a third party logistics provider for let's that matter any logistics provider, तो उसके केस में डिफरेंस कितना होता है शिपिंग टाइम में? जैसे सेलर्स प्रीफर FBA क्योंकि उसको उनको उस पे अगर दिख जाता है टू डे डिलीवरी फॉर, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये फॉर कस्टमर्स टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो उसमें एक बार आप मेरे को ट्रेड ऑफ बता दीजिए कि व्हाट इज द ट्रेड ऑफ लाइक। वंडरफुल। सो जब आप FBA यूज करते हो, you get a prime tag over there। You can also get a prime tag once you're fulfilling it from your own website, but that has to get fulfilled at a certain, like let's say you have a 2
two-day delivery across US. There are last mile service providers such as UPS, FedEx, जो कि 2 day लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज दे देते हैं यूएस में. सो आप 3PL पार्टनर अगर लेट्स से ऐसे यूज कर रहे हो जिनके पास मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, लेट्स से दे हैव अ वेयर हाउस इन द ईस्ट कोस्ट, दे हैव अ सेंट्रल, दे हैव अ वेस्ट कोस्ट वेयर हाउस, 3-4 वेयर हाउसेज है, तो फिर वो फिर एफबीए से भी आपको 101% सस्ता पड़ जाता है अगर वो एक बिगर लॉट का प्रोडक्ट है तो. अगेन वी हैव सीन स्मॉलर साइज प्रोडक्ट्स, तो एफबीए बहुत बहुत ही कॉम्पिटेटिव होता है, इंक्लूडिंग अपैरल एज एन इंडस्ट्री में वी हैव सीन एफबीए इज वेरी कॉम्पिटेटिव बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट 190 प्लस वेयर हाउसेज अक्रॉस द स्टेट्स राइट नाउ, राइट. तो उनके पास वो कैपेसिटी है वेयर एंड दे हैव दैट डेटा वेयर दे एक्चुअली गिव इट टू यू ऑन मल्टीपल वेयर हाउस फ्रेंड्स पे रखवा देते हैं. Similar to it, there are 3PL partners such as us over here where who have their warehouses in both East Coast and West Coast. हमारे पास एक West Coast का भी warehouse है. तो जब आपके पास यूएस में दोनों तरफ के warehouse है, you can opt for a 2 day delivery and get a prime tag also at your this thing. उससे rightly said उससे थोड़ी सी cost बढ़ जाती है 2 day delivery में, but again you can define them onto your this thing कि this is what you're going to be doing, and if you give an add-on thing to a customer कि आपकी 2 दिन के अंदर डिलीवरी होने वाला है, I think no one regrets it. Understood. So these were the questions from the side, their side. Do you have anything to add for any webinar? So I think there's no thumb rule. Actually, it totally depends on product to product. Like सारे products सबके अपने अपने rules बनाने पड़ते हैं. So you have to create your own set of rules. But आपको वो rules बहुत पहले ही define करने पड़ेंगे कि आप क्या set of rules को use करने वाले हो. जैसे मैंने भी अपनी प्रेजेंटेशन में मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको यही करना चाहिए, आपको उधर का लोकल वेयर हाउस ही यूज़ करना चाहिए, या आपको इंडिया ही मंगाना चाहिए, या आपको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं. इट एक्चुअली सीज दैट कि आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से वो ऑप्शंस कौन से सूटेबल होते हैं. यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन टू इट. इट इज नॉट दैट a third person can actually understand your business quite well. You are the person that who understands your business quite well. Obviously you can take help of our account managers at G Express also, who could actually give you an blunt answers about this thing कि भाई आपको कैसे आपके प्रोडक्ट को हैंडल करना है, बिकॉज हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे ना हो कि आप बेच ही ना पाओ प्रोडक्ट को उधर कि इतनी कॉस्ट लग जाए. सो वी गिव यू एंड राइट स्ट्रैटेजीज कि आप इसको इस तरीके से मोल्ड करके आप इसको यूज़ करें, सो दैट it becomes quite well. But again, at the end of the day, it is you who have to decide that what you're going to be doing and how you're going to be doing. We are just somebody who could guide you up and give you कि भाई as per our experiences, हमारे experience के हिसाब से क्या क्या हुआ है market में. Can you also please share your contact details in the chat so that people can contact you directly? Absolutely. I'm just sharing you on my mail ID at this chat. So you guys can actually mail me down at my direct email ID. Apart from this, you can mail us down at hello@gexpress, where our other team members will also be happy to help you out in any cases. Right. So I have Great. a mail ID down here. So I think Yes. So thanks a lot, Suraj, for taking out time and doing this for the customers. thank Also, let's make sure we give them out a detailed checklist which they can follow and get benefited from the same. We would also be sharing the recording for the same if in case they have missed any part of it. So thanks a lot again. Also, thank you to all the exporters here. Thanks a lot, Suraj. thank you guys. Bye bye. Bye bye. Thank you.